sir. What is there to make such a hue cry? Nothing has been gone to court. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं. No. A responsible minister, parliamentary affairs minister, has categorically referred in this house to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The Minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. The Minister has categorically asserted nothing has been gone to court. Nothing has been gone to court. Honorable Finance Minister. Sir, Honorable the minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the Minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honourable members, just listen, some of the honourable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honourable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं. हाँ, तो खुद मेंबर है JPC में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है. कितना ये अफसोस की बात है सर. May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari. Would you like to raise? You allow the one should be Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, बैठे आप बैठिए सर. पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए. मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं
यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ आकर जो आचरण कर रहे हैं वो चिंतन का विषय है, प्लीज। एंड नहीं, दे हैव गॉन देयर एवरी टाइम आते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर ये जो हो रहा है इसमें इससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है, अरे सुनिए, जिस आप बैठेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और यह सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। मैं एक सेकेंड, आई विल कम टू यू साकेत, आई विल कम टू यू। मेरा एक सेकेंड, एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी तो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, निर्णय स्लोगन शाउटिंग से नहीं होगा, निर्णय होगा आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब इस विषय के ऊपर आगे न बढ़ते हुए मैं, आप बोले जीरो नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, मैंने नासिर का भी नाम लिया है और मैंने साकेत का भी लिया है, और दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा। बैठिए साकेत, बैठिए। ओके, ऑनरेबल मेंबर्स टू एक सेकंड, अरे मुझे सुनिए, एक बैठिए एक बार बैठिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट smooth functioning of the house, I will give brief opportunity to Nasir and Saket and then take up my business. Sir, you sit, sir. Nasir. Nasir, 1 minute. Sir. 1 minute. Sir. 1 minute. Nadeem bhai. Sir. Okay. Sir. You don't want. Sir. I can't. Sir, ask him to sit. Ask him to sit and not to rise till I ask him to rise. Yeah. Sir, I cannot do that, sir. Sir, anyway. Then do you want me to act? I can. Sir. 1 minute. Go ahead. Sir, I want to make it very clear. The Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to. After him. I want to put it on record. My own dissent note. Introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up you from there. You can take recourse to law. That I'll authenticate it. Right to me. Sir, I'll authenticate it. Number right one. To me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. Okay, ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. Saket, 1 minute. 1 minute. Sir, my limited point here. Yes, within good. 1 minute. I'm glad. Limited focus point. Limited, sir. This is not a religious issue. This is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order, and then what the point of order? No, I'm coming. It's my president. The house is in order. Go ahead. No, so he spoke about
redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, Fine. calling them unparliamentary, because that is unconstitutional. Okay. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. should respond if any redaction has been done in the dissent okay, notes, fine. sir. Okay, okay, General. Now, Honorable Minister, and mind you, it is for the first time in the history of this country that a Buddhist is a minority affairs minister. Am I right? Thank you, sir. Yeah. A matter of pride to the entire global community. So, Thank you for reminding. Honorable Minority Affairs Minister, also Chairman, sir. Parliamentary Affairs Minister, pointed question reply. Sir, He is First of all- a Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है एक नजीमुल जी No, everyone take. One second. अरे जॉन ब्रिटस एक John, you know I compensate. Take your seat. सर Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir- Only Honorable Minister for Minority Affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? Honorable members, Who will take the responsibility? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे Question hour, हैं, Honorable Minister. सर जितना जेपीसी Question hour. बिल पे काम किया One है, second. आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया Okay. है। हजार